are going to discuss the nutrition topic, nutrition of the life processes. What is meant by nutrition first? The process, it is nutrition is the process by which human beings ingest by which human beings ingest food inside the body. Human beings ingest क्या करता है, ह्यूमन बींग्स अपना खाना लेता है अंदर में, एंड देन द फूड इज डाइजेस्टेड. डाइजेस्ट होने के बाद इट इज डाइजेस्टेड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू obtain energy for performing various life processes of the body. So what is meant by nutrition? क्या है? The process of taking food inside the body and oxidizing it to obtain energy for performing various life processes of the body. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Nutrition बोलते हैं. Now nutrition is divided into two types. One is autotrophic nutrition, another one is heterotrophic nutrition. Here, autotrophic nutrition. This is done by green plants and some bacteria. Autotrophic nutrition, ये क्या है देखते हैं. The mode of nutrition in which green plants and bacteria manufacture their own food with the help of simple inorganic molecules is called autotrophic nutrition. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है सच एज ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, ये अपना फूड अपने से मैन्युफैक्चर करता है और ये कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करता है. हम लोग बाद में देखेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपना फूड के लिए. बट हियर इन द केस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया डज नॉट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ सिंपल inorganic molecules. And these simple inorganic molecules are the raw materials. These are the raw materials for manufacturing food. What is meant by inorganic? Inorganic means non-living, simple non-living molecules. Now autotrophic nutrition is again of two types. One is photosynthesis, एक होता है photosynthesis, and the other one is chemosynthesis. We do not need to discuss about this chemosynthesis as this is not included in your class 10th syllabus. A little bit let us see. Chemosynthesis, यहाँ नाम से ही पता चलता है chemo means with the help of chemicals, with the help of chemicals like ammonia, hydrogen sulfide gases, ammonia, hydrogen sulfide gases, and methane, ammonia and hydrogen sulfide. They use these bacteria. This is performed by bacteria. ये करता है, बैक्टीरिया क्या करता है, ammonia, hydrogen sulfide and methane गैस को ऑक्सीडाइज करता है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद इससे जो केमिकल एनर्जी निकलता है उसी केमिकल एनर्जी से क्या करता है, अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है. वंस अगेन chemosynthesis, as the name suggests, bacteria, it is performed by bacteria and they use inorganic chemicals like methane, ammonia and hydrogen sulfide gases. ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब गैसेस जो है इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने के बाद उससे जो केमिकल एनर्जी निकलता है उसी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड मैन्युफैक्चर करता है. So this is a little bit only about chemosynthesis. Now our main focus is photosynthesis. What happens here? Photosynthesis. Here, photo means light. Here, green plants. The process green plants manufacture their food with the help of sunlight and chlorophyll in the presence of water and carbon dioxide.
So basically photosynthesis, what is it? The process, it is the mode of autotrophic nutrition in which green plants manufacture their own food with the help of water and carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. तो सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए, ये एक कंडीशन है, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों भी चीज़ होना चाहिए। और यही चार चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर द raw materials required for photosynthesis. It has been asked in the examination, what are the raw materials required for photosynthesis? So number 1, light, there is sunlight. Number 2, chlorophyll. Number 3, water. Number 4, carbon dioxide. Half mark each, 2 marks question. So these are the raw materials required for photosynthesis. Sunlight is obtained from the sun. Chlorophyll is present in the plants in an organelle known as chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट आर लेंस shaped plastids present in green plant parts, and these chloroplasts contain chlorophyll pigment which is required for photosynthesis. Now they will get water from the soil and carbon dioxide from the atmosphere. So these are the raw materials required for photosynthesis. Now photosynthesis has two reactions or phases. One is light reaction, जिसको हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेस भी बोलते हैं, एंड अनदर वन इज डार्क रिएक्शन और डार्क फेस, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेस. ये होता है लाइट डिपेंडेंट, दिस वन इज लाइट इंडिपेंडेंट. तो लाइट रिएक्शन में, लाइट डिपेंडेंट में क्या होता है? हियर sunlight, chloroplast present in the green parts of the plant absorb sunlight energy. sunlight energy को absorb कर लेता है, और absorb करने के बाद क्या करता है? sunlight energy is converted into chemical energy. सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर यही केमिकल एनर्जी जो होता है, दिस केमिकल एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. व्हाट इज मीन बाय फोटोलाइसिस? फोटो मीन्स लाइट, lysis means splitting. So splitting of water molecules in the presence of sunlight is called photolysis of water. तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट एनर्जी जो है उसको क्लोरोफिल जो है वो ट्रैप कर लेता है. ट्रैप करने के बाद सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फिर वही केमिकल एनर्जी के हेल्प से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करता है. उसका रिएक्शन ये है. वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इज sunlight, this is the symbol for sunlight, and it is splitted into 2 hydrogen ions plus half molecule of oxygen plus 2 free electrons. यहाँ पर 2 free electrons भी रिलीज होता है. तो ऐसे ही होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. दिस इज द लाइट रिएक्शन फेस. नाउ हियर अगेन डार्क रिएक्शन और डार्क फेस. इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड is reduced to carbohydrates by a reaction or cycle known as Kelvin cycle. इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है. रिड्यूस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन फिर कहाँ से आता है? यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन आयन मिला था, यही हाइड्रोजन आयन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में आकर के ऐड हो जाता है. दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ऐड होने के बाद क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज C6H12O6, सबको पता ही होगा. नाउ लेट अस सी क्या एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड chlorophyll forms carbohydrate, that is glucose C6H12O6, and releasing out oxygen as a byproduct. So
Now again, after finishing the two phases of photosynthesis, let us see what are the events occurring during photosynthesis. क्या क्या events होता है? This is a very popular board question and it is asked almost all the times as 3-mark question. तो क्या क्या होता है? 3 events occur during photosynthesis. First one, absorption of sunlight. Absorption of sunlight. ये कौन एब्जॉर्ब करता है? Sunlight is absorbed by chlorophyll. Absorption of sunlight by chlorophyll of plants. प्लांट्स के अंदर में जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसको ट्रैप करके रख लेता है. सेकेंड नंबर, सेकेंड इवेंट, दिस सनलाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड. Sunlight energy is converted into chemical energy. There is conversion of sunlight energy into chemical energy, and यही chemical energy से फिर क्या होता है? As we have already studied in the light dependent phase, there is light reaction phase में जो अभी just पढ़े थे, photolysis of water होता है. This chemical energy, with the help of this chemical energy, that is splitting of water molecule, splitting of H2O molecules into hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में यही केमिकल एनर्जी का हेल्प से वाटर को स्प्लिट किया जाता है. थर्ड नंबर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू carbohydrates, that is glucose. So these are the 3 events that occur during photosynthesis, and this is almost asked all the time in CBSE examination. Absorption of sunlight by chlorophyll. प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट, वो क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फिर वही सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. वही केमिकल एनर्जी के हेल्प से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट करता है, और यही हाइड्रोजन का हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस किया जाता है और फिर कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया जाता है, दैट इज C6H12O6. So what is the overall reaction of photosynthesis? क्या है overall reaction? Let us see. Carbon dioxide, 6 molecules of carbon dioxide will react with 6 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll pigment to form 1 molecule of glucose and giving out 6 molecules of oxygen as a byproduct. So this is the overall reaction of photosynthesis that happens in green plant parts. So now we can say that photosynthesis occurs not only in the leaves, it occurs in all the green plant parts. जितना भी green plant parts होता है, जैसे कि green stem भी हो अगर, तो उसमें भी photosynthesis होते रहता है. Let us see stomata. This ये क्या होता है? These are the minute openings. Minute means very small और tiny. ये बहुत ही small openings होता है. कहाँ पर होता है? Present on the epidermal surface or epidermal surface, that is mostly on the lower surface of the leaves. And what is its function? These stomata are the minute openings present on the lower surface of leaves through which क्या होता है? इससे exchange of respiratory gases takes place. What is meant by respiratory gases? Respiratory gases means oxygen and carbon dioxide. So क्या होता है? Stomata minute openings होता है, very small openings present on the lower surface of leaves. इससे क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लीफ और इन्वायरमेंट के बीच में एक्सचेंज होते रहता है. नाउ
Stomata. Let us see the diagram of stomata. And basically a typical diagram I am drawing. You must practice drawing this diagram since it is asked in board exam also. Diagram is asked. Now this is a diagram of an open stomata. Here these are the subsidiary cells. Subsidiary cells means the cells surrounding the stomatal pore. These are the subsidiary cells, and these two are the kidney shaped or bean shaped guard cells. Kidney shaped or bean shaped guard cells. Here we can see these dots. These dots are nothing but our long awaited what? Chloroplast pigments. Chloroplast containing chlorophyll pigments. And here is the stomatal pore. Now this is the typical diagram of an open stomata. Here now we will see the mechanism of opening and closing of stomata. This stomata, this opens and closes. How does it open and closes? This is the mechanism. Now here these subsidiary cells contain water. Now when water flows into these guard cells from the subsidiary cells, जब गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल में वाटर इन करता है, then what will happen? These guard cells swell up. These guard cells become swollen up. ये फूल जाता है. These guard cells become turgid. Turgid means swell up. And when this guard cell become turgid, then what will happen? This will automatically get open. And likewise, when water has evaporated from the leaves, that is when water has been lost from the guard cells, then what will happen? These guard cells will automatically shrink, leading to the closure of the stomatal pore. So this is the mechanism. As I have given in the PDF notes, you will see I have given this mechanism in the PDF notes. Once again, when water moves from the subsidiary cells into the guard cells, it creates more turgidity in the guard cells, and so क्या होगा? These guard cells will swell up, leading to the opening of stomatal pore. When water moves out from the guard cells, these guard cells automatically closes or shrinks, leading to the closure of the stomatal pore. So this is the mechanism of opening and closing of stomata. Now the second type of nutrition, that is heterotrophic nutrition. इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड अपने से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता है, and so they have to depend on other organisms, mostly the autotrophs, that is green plant पे डिपेंड करना पड़ता है. ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करता है क्या करने के लिए? अपना फूड मिलने के लिए. So here in this nutrition, the organisms can't manufacture their own food by simple inorganic materials, and so they have to depend on other organisms for their food, mostly the green plants, that is autotrophs. Now heterotrophic nutrition is of three types. They are holozoic, saprophytic, and parasitic. So what is holozoic? Holozoic, here the organism take inside solid food. Solid food को क्या करता है? Ingest करता है. Ingestion means, we will discuss again in more details in human nutrition. Ingest means intake of food inside the body. So solid food is ingested, digested, absorbed, and then assimilated. Assimilated means it is used up for obtaining energy for performing various life activities of the body. So in this mode of nutrition, the organisms take inside solid food, then digest it,
and then assimilate means oxidize the food material to obtain energy for performing various life processes. ये किस में होता है? It happens in us, that is human beings. It happens in other multicellular and developed organisms such as birds, cats, etc. This one is very easy. Saprophytic. Here what happens? Some organisms like yeast and fungi, ये सब क्या करता है? They depend on dead and decaying depend on dead and decaying organic matter. Organic matter means the dead bodies of different plants and animals. So saprophytic organisms such as yeast and fungi क्या करता है? Dead and decaying plant and animal body part से ही अपना food लेता है. Third one is parasitic. Here these organisms, they don't take inside solid food. They depend directly, that is they obtain food, digested food. Which type of food? They obtain digested food directly. They obtain digested food directly from the body fluid of other living organism known as host. मतलब दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी में जाके रहता है और अपना फूड उसी बॉडी ऑर्गेनिज्म का बॉडी फ्लूइड से लेता है, एंड दैट फूड विल बी डाइजेस्टेड फूड. दे absorb digested food directly from the body fluid of another organism, and that another organism is called the host. For example, we can see in the case of leech, in the case of ticks, in the case of cuscuta, a large parasitic flower. So here in heterotrophic nutrition what happens? The organism cannot manufacture their own food by themselves and दूसरा पे डिपेंड करना पड़ता है, that is mostly green plants, autotrophs पे डिपेंड करना पड़ता है for their food. This heterotrophic nutrition is of three type: holozoic, saprophytic, parasitic. holozoic में क्या करता है? The organism ingests inside solid food देता है और फिर उसी को डाइजेस्ट करता है, फिर उससे एनर्जी लेकर के अपना बॉडी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. ह्यूमन बींग्स हम लोग में होता है. सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड फंजाई, वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल बॉडी पार्ट से लेता है. पैरासाइटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड दूसरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी फ्लूइड, दैट इज ब्लड हो सकता है, नहीं तो टिश्यू फ्लूइड हो सकता है, नहीं तो लिम्फ हो सकता है, वो बॉडी फ्लूइड से डायरेक्टली सक करता है, एब्जॉर्ब करता है. For example, leech, tick, cuscuta, etc.